This conference will now be recorded. And inside the project 2 हमारा एक client है. The client name is called Pankaj. So this is a client. Client name is Pankaj. And Pankaj ने हमें एक project दिया है. This is the name of this project is deploy a web server. So guys, this is a project name. And इस project को जो execute कराने वाला है, the execute of this username is called I'm talking about like शशांक, शिवम, वैभव, विकास, विवेक. ये सारे लोग इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं. So they deploy the web server with multi-availability zones. तो लाइक द पंकज ने एक दिया है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लाइक आप लोग इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो. लाइक मैंने ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है. So guys, again, सबसे पहले first question, in deploy this project in which cloud? So now I'm deploy this cloud for like in AWS. Second of location of this, कि आप इस प्रोजेक्ट को किस लोकेशन पे लेना चाहते हो, तो I'm using the Mumbai. And in which operating systems? So I'm using like a Windows AMI. Got it, everyone? But this for the multi-availability zones. So multi-availability zones का मतलब है कि guys, this is my AWS cloud. In this cloud, there are the multiple zone is available, like a zone A and like a zone B. So now I'm deploy this project in two different zones. So the region name is Mumbai. The Mumbai code is AP hyphen south hyphen 1. So this is a region code AP South 1. And now the is this region, there are the 3 zones are available, but free tier accounts only 2 zones are working. So I'm using the 2 zones. This is the 2 zones is available, is zone A and this is my zone B. And now I'm just, this is the name of zone is zone A and this is the name of zone B. Now so multi अवेबिलिटी जोन्स का मतलब है कि यू कैन डिप्लॉय, पंकज ने कहा है कि मल्टी अवेबिलिटी जोन्स, यानी कि आपको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, वो दोनों जोन में एक साथ बनाना है. सो नाउ यू कैन क्रिएट अ 2 वेब सर्वर्स, यानी कि एक सिंगल जोन में ना बनाने के बाद यू कैन क्रिएट अ मल्टी वेब सर्वर. तो मल्टी अवेबिलिटी जोन्स का मतलब है कि आपको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है वो 2 जोन्स के अंदर डिप्लॉय करना है. तो लाइक यू कैन क्रिएट अ 1 वेब सर्वर इन दिस लोकेशन and second web server on this location. Got it the point, guys? This is the web 1 and IP of this web 1 like a 1.1.1.1 and this is a like a web 2 and IP of web 2 is 2.2.2.2. So these are the 2 server you can deploy in 2 and use which operating system? Windows. तो आपको वेब सर्वर बनाना है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप जो AMI यूज करने वाले हो, यू कैन यूज द AMI ऑफ सर्वर 2012. तो दिस इज द AMI, आपको ये वाली AMI यूज करनी है. और विंडोज का है तो आपको यहां पर इंस्टॉल IIS सर्विस इंस्टॉल करनी है. देन उसके बाद क्या करना है? क्रिएट वेब कोड और अपना वेब कोड क्रिएट करना है वेब 1 पर. सेम काम आप वेब 2 पर भी करेंगे. द सेम वर्क इज डिप्लॉय इन वेब 2 also. Got it everyone, guys? So you can create a 2 servers in 2 different zones, AP South 1A and AP South 1B. Then you create a 1 security group. You can create a 1 security group
or in this security group you can allow the protocols of HTTP, HTTPS and RDP for Windows. So this is my security group. Got it? These three things, guys, everyone. Yes, Guys, sir. is it clear? Pankaj, Yes, Rahul, sir. Sandeep, Sasank. Yes, sir. Yes. नाउ गाइस, अब यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि अगर आपको याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले अपनी आई थिंक सेकंड क्लास में एक वेब सर्वर डिप्लॉय कराया था जिसमें आपने अपनी वेबसाइट पर्टिकुलर उस सर्वर के आईपी से एक्सेस करी थी. Yes, sir. यस और नो? तो अगर मैं वेब Yes. सर्वर का आईपी लेता हूं तो आप मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती है 1 पे. अगर मैं वेब सर्वर 2 का आईपी लेता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर 2 पे जाएंगी. दैट मीन देयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन. तो जब भी आप मल्टी एबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, व्हेन यू डिप्लॉय द मल्टी एबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट, तो यू आल्सो यूज अ लोड बैलेंसर. आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? लोड बैलेंसर. The use of load balancer, the load balancer distribute traffic between multiple servers, maybe server work in same zone or multi-zone. When any server goes down, the automatically load balancer redirect all traffic to active server. Got it, guys? तो लोड बैलेंसर का एक्चुअली काम क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे अब क्या करा, आई एम कनेक्ट विद लोड बैलेंसर. मैंने यहाँ पे एक लोड बैलेंसर कनेक्ट कर दिया गाइस. इन दिस रीजन this is my load balancer. I am just using the load balancer of classic load balancer. And now guys, these classic load balancers are connected with web server 1 as well as in web server 2, and now also it's connected with the same security group. When अब आपका अगर पब्लिक ट्रैफिक कोई भी आएगा ना तो पर्टिकुलर इन आईपीस पे नहीं आएगा. द पब्लिक ट्रैफिक कम्स इन योर लोड बैलेंसर. लाइक यू ऑल आर द यूजर्स. आप सभी यूजर्स हो. अब आप सभी लोग जब सर्च करेंगे तो आपका जो ट्रैफिक है वो किसको हिट करेगा? लोड बैलेंसर को. एंड लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रैफिक टू द वेब सर्वर 1 and web server 2 also. If the web server 1 is goes down, so the all traffic distribute in web server 1 only. Got it, everyone? Got it, the concept of load balancer? Why I'm using the load balancer? Yes, Yes, sir. Guys, the concept, the benefit of this कि in that scenario, इस सिनेरियो में आपका जो ट्रैफिक है ना वो डायरेक्ट अब सर्वर के पास नहीं जा रहा है. गॉट इट गाइस? अब ट्रैफिक आपका सर्वर के पास मूव डायरेक्ट नहीं हो रहा. यानी कि पहले जब हम कर रहे थे तो हम डायरेक्ट सर्वर के आईपी से कर रहे थे, जो कि एक अनसिक्योर कॉन्सेप्ट था हमारा. लेकिन अब हमारा जो ट्रैफिक है वो कहां पे हिट कर रहा है? लोड बैलेंसर पे. अगर मेरे दोनों के दोनों सर्वर, अगर मेरे दोनों सर्वर ही क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा. यानी कि ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा. और व्हेन कि अगर आपका एक सर्वर डाउन होता है तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? जो भी ट्रैफिक आउटसाइड से आ रहा है उस ट्रैफिक को इसी की तरफ रोटेट कर देगा. गॉट इट द पॉइंट? एक ही सर्वर पे. लेकिन अगर आपके बहुत सर्वर्स आर एक्टिव तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? देयर इज सम ट्रैफिक रोटेट इन अ दिस सर्वर and some traffic rotate to this server.
इक्वली वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, अब sir. कॉन्सेप्ट यहां पर ये आता है कि सपोज करो कि हमने पहला सर्वर बनाया और इस सर्वर की कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली, मैं एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की। इट्स मैनेज 1 लाख रिक्वेस्ट। नाउ if your request come is more than 1 lakh, if your request come in more than 1 lakh, तो क्या होगा guys? This server is goes down, इसकी कैपेसिटी से ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर रिप्लाई करना बंद कर देगा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हैंग हो जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है कि वी आर यूजिंग द मल्टीपल सर्वर। अगर मैं इस बार मल्टीपल सर्वर्स लगा देता हूं और ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद दिस लोड बैलेंसर, Good, good. तो अब मेरी रिक्वेस्ट कितनी 5 सर्वर्स लगाए तो दैट मींस 5 लाख रिक्वेस्ट को मैं मैनेज कर सकता हूं ना। Yes, sir. तो दैट्स व्हाई कि कभी भी आप वेब सर्वर्स लगाएंगे गाइस, तो इन दैट सिनेरियो यू यूज, इफ यू कलेक्ट अ मल्टीपल वेब सर्वर्स और मल्टीपल सर्वर्स, अगर आप कभी भी मल्टीपल सर्वर्स लगाते हैं तो आपको लोड बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी। या तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी में डालिए, बट प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं डालेंगे अगर हमारी कॉस्ट लाइक अगर देयर टू एग्जिट पॉइंट अवेलेबल इन योर बिल्डिंग, तो आप दोनों एग्जिट पॉइंट्स का यूज इक्वली करोगे ना, ये नहीं ना कि ट्रैफिक एक से ही आने दोगे, क्योंकि पैसे तो आपने दूसरे के भी दिए हैं। दैट्स व्हाई कि इसलिए हम यहाँ पे इक्वली लोड बैलेंसर का काम है कि डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इक्वल टू द मल्टीपल सर्वर, either the servers are available in same zone or either the server is available in a different zone. Got it the point? So Yes, sir. let's start guys. So यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, I'm deploy a different website, but real time में आपकी मिरर कॉपी होते हैं, यानी कि आपके दोनों सिस्टम पे सेम ही वेबसाइट होगी। तो अगर आपका एक सर्वर डाउन भी जाएगा तो आपको फ्रंट एंड पे यानी कि यहाँ पर इन यूजर्स को पता नहीं लगेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किस सर्वर से आ रही है, आइदर इज द सर्वर 2 से आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो रही है या सर्वर 1 से, क्योंकि आप तो फ्रंट एंड पे हो। तो जहां पर भी सर्वर्स लगे रहते हैं उस पैनल को गाइस हम बोलते हैं बैकएंड पैनल। इस पैनल को हम बोलते हैं बैकएंड। गॉट इट? दिस पैनल इज कॉल्ड अ बैकएंड। एंड जहां पर हमारी रिक्वेस्ट आती है, तो रिक्वेस्ट हमारी कहां पे आ रही है, तो रिक्वेस्ट कम इन अ लोड बैलेंसर। इस पैनल को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। गॉट इट? द बैक एंड एंड फ्रंट एंड का मतलब क्या है? फ्रंट एंड मतलब जहां पर रिक्वेस्ट आ रही है, बैक एंड जहां से रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो रही है। लुक लाइक कि आप रिसेप्शन पे जाते हो तो रिसेप्शन इज अ फ्रंट एंड, और रिसेप्शन से आपकी क्यूरी फॉरवर्ड होती है अंदर ऑफिस के अंदर, तो रिप्लाई ऑफिस से आएगा, वही काम रिसेप्शन वाले करेंगे। गॉट इट द पॉइंट गाइस? इन योर सिक्योरिटी गार्ड इज अ फ्रंट एंड, एक्सचेंज ऑफिसर इज अ फ्रंट एंड, बैंक गार्ड इज अ फ्रंट एंड। जो आपको सबसे पहले रिसीव कर रहा है वो फ्रंट एंड है। So now I'm implement this practical today. Got it the scenario? Yes, So sir. I'm just logging with Yes, sir. portal, and first of all I'm created 2 web servers in 2 different zones. So before getting server, I'm just see the some important facts. So first of all I'm just create a one security group. So I'm just click on a security group, and now these are the default security groups. So I'm delete these security groups. And I'm create a one security group, load balancer -sg, and allow protocols
It's an add rules. Choice is your. You can allow which services. So as per the requirement for the website, need a HTTP, HTTPS, and I'm using Windows, so Windows के लिए RDP protocol is required. और अगर आपको नहीं पता है, so you can just select all traffic. Now, so custom anywhere, और नाउ मैं IPv6 को भी एनीवेयर कर देता हूँ, IPv4 के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ. सो हो सकता है कि कुछ यूजर IPv6 यूज कर रहे हो. तो नाउ ऑल ट्रैफिक, बट हम कभी भी रियल टाइम पे ऑल ट्रैफिक नहीं देते. सो आई एम क्रिएटिंग अ वन लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप. सो मैंने सबसे पहले रूल डिफाइन कर दिए. सेकंड, आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर. सो आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर, सो वी नीड अ विंडोज की पेयर. और विंडोज के लिए गाइस कौन सा एक्सटेंशन की पेयर यूज होती है? For Windows, we are using a .pam extension key pair. So now in this scenario, already the Windows key pair is available with the name of DevOps Windows Linux. So I'm not create a new key pair. अगर आप create भी करना चाहते हैं, so you can just give the key pair and select the .pam and then create a key pair. So I think so these two option is clear, everyone. Yes, sir. Now I'm deploy a web server. So web server deploy करने के लिए I'm go to the as per the I'm created two web servers in two different zone. One is A and second is B. After deploy the web server, I'm just log in with server and install the Iis service or deploy a website. So now I'm just go to instances and then click on a launch instance and search in server 2012 because my project is Windows based. Select the operating systems, Windows Server 2012, and now select the hardware type is T2 micro. In a John, so John, I'm the one Pella server I'm deploying AP South 1A. Next, 30 GB storage is free. Give the name is Web1. Security group, I'm select the existing security I'm already create, or either you create during deploy the server and select a key pair. Same as I'm there. So at this time, this web server 1 is deploying AP South 1A as per the diagram. Now I'm deploy the another server. Again deploy the one more server, Microsoft Windows server. And अगर आप मिरर कॉपी करना चाहते हो तो गाइस पहले वाले सर्वर की आपको AMI क्रिएट करनी है और उसको आप एड ऑन कर सकते हो, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कल आपको कराऊंगा जब मैं एक और लोड बैलेंसर यूज करूंगा. तो मल्टीपल लोड बैलेंसर्स हैं यहाँ पर, हम वन बाय वन एक एक यूज करेंगे. एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन availability John AP South 1B, enable the public IP. Next, then next give the name of web2, then next select existing security group, review and launch and select a key pair and launch instances. Now I'm just login with web server 1. Click on web server 1, then click on connect, then click on RDP, then get password, browse, select the key pair. And login with the web server 1. And after login this web server 1, I'm just create one website on this virtual machine. So how to create a website? So I'm just create a website, just a minute. First it's login, then we have continue. So first of all, I'm install the Iis service and change the password of this particular virtual server, and then create a website and create a one HTML website. So first of all, I'm create a one HTML website. I'm just click
on virtual machine and search in Notepad. And now I'm just create a one website. Welcome to my ICCP Infotech Web Server server 1. So guys, I'm creating a, this is a one page and this is I'm creating a one website. So now I'm create a one website. सबसे पहले developers ने क्या करा, एक website बनाई and I'm save this website in a desktop. मैंने एक वेबसाइट बनाई है गाइस, सो मेरे को इतनी कोडिंग आती है, सो इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता. index.html. so और I'm save this website on a desktop. तो गाइस ये मैंने अपना वेब पेज एक बना लिया. Now I'm install the Iis service. I'm just click and go to the server manager. And click on add role and features. Next, next, and select a web server. Next, and install. So this is the first way. Same as I'm just log into another web server 2, then click on connect, then RDP, then get password, browse, select the key pair. And now I'm just install the Iis service and create one website or web pages. So this is the guys web server 1 और ये जो मैंने अभी वेब पेज बनाया था, I'm just copy this web page. और आपको पता है कि वेबसाइट हम कहाँ पे स्टोर करते हैं in a server. So I'm just going C drive in www inetpub and www root, and I'm delete this default web page and paste. And now change the password of this server. So I'm just go to the window R, click on CMD and type net space user administrator, and the password is ASD at 1234. This is a successfully. And now guys, I'm just close this web server 1. And now अगर मेरे को check करना है, I'm just copy the IP of the web server 1 and paste in a browser. So now this is a welcome to my ICCP Infotech Web Server 1 and subscribe my YouTube channel. So now guys, I'm just deploy a second web server. So I'm create a one website again. Search in Notepad. So welcome to my Google ICCP Infotech TECS Tech
server 2. So this is server 2, guys. I'm create server 2, and now I'm adding the another paragraph. Please review my Google page. Infotech, or now I'm just close H2 slash. So guys, I'm just create another web page, and I'm file and new, and sorry, cancel file and save as on desktop with the name of index index.html, and now save on a desktop. And after that, I'm just install the same Iis service on this server. तो अगर आपको 10 सर्वर्स बनाने हैं तो 10 के 10 सर्वर्स पे आपको सेम काम करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि ये सारा काम बार बार ना करना पड़े, तो आप किस चीज का यूज करेंगे गाइस? ये बार बार आईएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ये सारा काम मुझे बार बार ना करना पड़े, तो मैं किसके थ्रू वेब सर्वर डिप्लॉय करूं? इमेज के Snapshot, sir. कस्टम इमेज के थ्रू. गॉट इट? तो मैं अगर पहले वेब सर्वर की कस्टम इमेज क्रिएट कर लूंगा, तो मैं जो ये बार बार इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहा हूँ, तो ये सारा का सारा टाइम मेरा बच जाएगा. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो अब लॉजिक पता लगा आईएम का? यस सर. कोई नहीं, कल हम वो भी करेंगे. जो भी चीज हमने करा है ना, वो सारी चीज अभी हम यूज करने वाले हैं आज और कल की क्लास में. Now I'm change the password, and I'm just copy and paste my website. So this is my web page. I'm just copy and go to C drive in this web server web page, initpub www root, and now delete this one and control V, and now close it. And now guys, I'm just move page the web server 2. So you can see that this time the both server are different IP addresses is available. So welcome to my Google ICCP Infotech server 2. The please review my Google page in ICCP Infotech. So review की spelling mistake हो चुकी है. So now guys, as per the diagram, I'm deployed in two different web server in two different zone. Now guys, if I'm just deploy the load balancer. So guys, अगर मैं load balancer की बात करता हूँ, so I'm using a load balancer of Classic. So I'm using the Classic load balancer. So when the Amazon comes, the first load balancer is Classic. So the Classic load balancer है, it is a combination of two service. One is network. तो ये आपके नेटवर्क के बेस पर भी आपके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, प्लस एप्लीकेशन के बेस पर भी लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. बट अब Amazon ने क्या करा है, Amazon ने नेटवर्क लोड बैलेंसर अलग से बना के दे दिया और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी अलग से बना दिया है. तो नाउ टुडे आई एम डिप्लॉय द क्लासिक लोड बैलेंसर, जो आपका लोड चाहे नेटवर्क बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है या आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे इंक्रीज हो रहा है. सो हर तरीके से ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर. आपके दो तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं. वन इज internal load balancer, either private load balancer or either LAN load balancer. These are the same name. The internal load balancer, private load balancer, the provide access only LAN network.
यानी कि विद इन अ लैन नेटवर्क अगर आप इंटरनल लोड बैलेंसर बनाते हो तो गाइस सिर्फ आप लैन लोड बैलेंसर यानी कि लैन नेटवर्क के अंदर ही अपने वेबसाइट और अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो व्हेन यू डिप्लॉय द इंटरनल लोड बैलेंसर। बट व्हेन यू डिप्लॉय द लोड बैलेंसर ऑफ एक्सटर्नल लोड बैलेंसर को हम पब्लिक लोड बैलेंसर भी बोलते हैं, और इस पब्लिक लोड बैलेंसर को गाइस हम इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर भी बोला जाता है। That means when it provide access in LAN and WAN also। तो यहां पर ये जो लोड बैलेंसर है ये आपके LAN और WAN दोनों लोकेशन पे एक्सेसिबल हो सकता है। तो गाइस आप इसको एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी कॉल कर सकते हो, इसको हम पब्लिक लोड बैलेंसर भी बोल सकते हैं और इंटरनेट फेसिंग भी है, बट इनका काम क्या है, तीनों का काम सेम ही है गाइस, एक ही चीज के थ्री नेम्स है। तो गाइस विच वन आई एम डिप्लॉय, अगर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने मोबाइल फोन पे ये सब एक्सेस करें तो मैं इंटरनल डिप्लॉय करूं या एक्सटर्नल? गाइस मैं कहता हूं कोई यूजर मेरा यूएस में बैठा है, कोई मेरा लाइक इंडिया के अंदर बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, तो ऑल आर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशन। सो विच वन आई एम डिप्लॉय, इंटरनल और एक्सटर्नल? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एक्सटर्नल। So guys we have deployed the external। so जब आप load balancer बनाएंगे तो these options are available। सेकंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा VPC का। तो when we deploy the VPC, तो VPC के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे select zone। तो मैं कितने जोन सेलेक्ट करूं यहाँ पर, सिंगल जोन या मल्टी जोन? मल्टी जोन। मैं आई एम सेलेक्ट मल्टी जोन। मल्टी जोन का मतलब है कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो किस जोन में है, जोन ए एंड जोन बी। तो मैं यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मल्टी जोन सिलेक्ट करूंगा, और जोन ए एंड जोन बी दोनों ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे जो सर्वर डिप्लॉय हो रखे हैं वो सिंगल जोन और मल्टी जोन्स में है। तो एक सर्वर मेरा ए में है, बी में है। तो अगर आपने यहाँ पर नेटवर्क भी सिलेक्ट नहीं करा तो भी आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। So now the how to create a load balancer, first I'm create a load balancer, then I'm attach a server। So there are the two options कि when you create a load balancer, आप load balancer बनाते वक्त भी you can attach a web server, आप तभी web server attach कर सकते हो, but I am not attached during deploy load balancer। मैं servers को बाद में attach करूंगा, जब मैं load balancer बनाऊंगा उस समय I am not attached server with load balancer। So how to create a classic load balancer is simple way guys, you can see I'm just close this session। Now the two server are running on। I'm just go to the EC2 panel or you can see the option is available is load balancing, or inside the load balancing the option is coming load balancer, or inside the load balancer the option is available create a load balancer। And now create a load balancer, you can see the all load balancer display is application network gateway load balancer is coming before 3 months, and one more load balancer is classic load balancer। So now I'm just click on a create in classic load balancer and give the load balancer name is INDIA India -LB load balancer, and VPC, so I'm using a default VPC। create an internal load balancer, अगर आप internal बनाना चाहते हो you can just click on this, but मैं external बनाना चाहता हूं, so by default it's create external। enable advanced VPC configuration, yes click। protocol is HTTP zones, so my one server deploying zone A and second server in deploying zone B, so that's why I'm deploying in zone A and zone B। if you deploy in a multiple zones you can select all, choice is yours। now next select a security group, I'm select this security group। तो जो प्रोटोकॉल आपके सर्वर पे है वो लोड बैलेंसर से भी अलाउड होने चाहिए, लाइक सेम एज कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर देयर आर 3 बायोमेट्रिक फीचर्स इज अवेलेबल, और अगर आपको उस बिल्डिंग से एग्जिट होना है तो आपके पास तीनों बायोमेट्रिक फिंगर में आपकी एंट्रीज होनी चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर आपकी एंट्री होनी चाहिए। सेम कि अगर आपका कोई प्रोटोकॉल सर्वर से अलाउड है बट आपके लोड बैलेंसर पे ब्लॉक है तो भी आपका वेब सर्वर काम नहीं करेगा। सो इक्वली आपका रूट क्लीन होना चाहिए, कि कहते हैं ना ट्रेन पास होनी है तो सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, अगर उसमें से एक भी रेड हुआ तो आपकी ट्रेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यस और नो, दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट है।
Therefore, I'm using the common security group. Next. Then next, this is a health check. Health check का मतलब है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो HTTP से आएगी. The port number is 80 and ping. Ping का मंगा है जहां पर जिस लोकेशन पे मेरी वेबसाइट रखी हुई है. So I'm just remove the name. So www root. So slash का मतलब गाइस रूट ही होता है. तो ये मेरी रूट लोकेशन है और यहाँ पे किसी भी नाम से मेरी वेबसाइट हो सकती है. This is a response time. The within a 5 second मेरे वेबसाइट एक्सेसिबल होना चाहिए और जितने भी सर्वर्स आपस में कनेक्टेड है वो इंटरवल टाइम से 30 सेकंड्स. अनथ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर. अगर कंटिन्यूसली 2 बार मेरे सर्वर्स फेल हो जाते हैं, लाइक मैं पिंग करता हूं अपने दूसरे वेब सर्वर 2 को, कॉन्जिक्यूटिव अगर 2 टाइम्स वो क्या होता है फेल हो जाता है तो उसको अनहेल्थी कर लेगा. अनहेल्थी का मतलब है गाइस कि वो उसको रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा. और नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेस बिफोर डिक्लेयरिंग द EC2 और 10. तो 10 टाइम्स वो कंटिन्यूसली उसको चेक कर सकता है और हेल्थी मार सकता है. दिस इज द पिंग पोंग रिक्वेस्ट कि बिटवीन सर्वर्स एक दूसरे की कनेक्टिविटी चेक करेंगे. तो लोड बैलेंसर भी चेक करेगा और सर्वर्स भी आपस में करेंगे. So that the you load balancer will automatically perform the health check on your EC2 instance and only route traffic to instance that pass the health check. अगर आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है देन है वो रिस्पॉन्स करेगा. अगर कोई भी सर्वर डाउन हुआ तो वो अनहेल्थी हो जाएगा. अनहेल्थी हो जाएगा तो जो दूसरा सर्वर एक्टिव है वो उसी को ही फॉरवर्ड करेगा. And if any instance fail to health check, it's automatically removed from the load balancer. अगर कोई भी सर्वर मेरा डाउन जाता है तो लोड बैलेंसर से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिमूव्ड भी हो जाएगा. Now add instance. Next I'm created 2 web servers. So I'm not attach any web server with load balancer. अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो the both web servers are attached with load balancer, but I'm not attach any server with the load balancer. Enable cross zone का मतलब है guys I'm deploy my web server in 2 different zones. One is AP South 1A and second is AP South 1B. And enable connection. So मैं चाहता हूं अगर मेरा एक डाउन हो जाए तो within 100 सेकंड मेरे दूसरे वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाए. Now next, review and create. Got it guys? How to create load balancer? Is it clear? Everyone, is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Now the next point is how to attach server with load balancer. So simply way guys, you can select the load balancer and then click on instances. When you click on instances, there's a no any instances attached. There the 2 zones are attached with this load balancer, but there's a no any server is attached. So now I'm at the server. So now I'm just edit instance and select. So अगर आपको अपने servers को add करना है, so you can select the load balancer, click on instances and select the web servers. Now at this time the status is out of service. When this service is coming in service, then my load balancer is working properly. So you can see the instance is registration is still in progress और within a minute ये आपके जो servers हैं ये आपके load balancer के साथ attached हो जाएंगे. And now I'm just refresh. So you can see at this time the in service is coming. Now how to access this service? So guys, when you attach the load balancer, so at this time load balancer give you the one URL. This is a URL till.com. अब आपको जो सर्वर एक्सेस करने हैं आपको इस पर्टिकुलर URL के थ्रू एक्सेस करने होंगे. So now you can just copy this URL and I'm share this URL with you guys in chat box. और आप क्लिक करिए और बताइए तो आप देखिए किसी की रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पर जाएगी और किसी की रिक्वेस्ट वेब सर्वर 2 पे जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेक कि मेरी रिक्वेस्ट किस लोकेशन पे जा रही है. आई एम जस्ट पेस्ट एंड इंटर. So guys, my request forward in web server 1. So guys, please check and reply me in chat box कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो किस वाले सर्वर पे जा रही है, 1 पे और 2 पे. You can click on this URL. मैंने chat box में शेयर. वन पे जा रही है सर. तो गाइज अगर मेरी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पर जा रही है, सो इफ आई एम जस्ट ड्यू टू एनी रीजन माय सर्वर 1 इज गोज डाउन, मेरा अगर वेब सर्वर 1 क्या हो जाता है, गोज डाउन हो जाता है, तो लोड बैलेंसर मेरी रिक्वेस्ट को कहां पे फॉरवर्ड कर देना चाहिए, दूसरे सर्वर पे. दूसरे सर्वर पे. सो कट जाए, जस्ट रिफ्रेश व्हेन द सर्वर इज कंप्लीटली स्टॉप, देन यू कैन रिफ्रेश.
the automatically my request come to another server. Please refresh everyone. Yes, sir. So now guys, again you can see if I'm just click on load balancer and go to the instances. So here the out of service, यानी कि मेरा जो एक सर्वर है वो क्या हो चुका है, आउट ऑफ सर्विस हो गया है. गॉट इट. सो आउट ऑफ सर्विस. अब अगर मैं सर्वर को ऑन कर देता हूं दोबारा से, if I'm just power on this server, so again जैसे ये सिस्टम यहाँ पे रनिंग स्टेट में आएगा इन 2x2, देन यू कैन सी कि दोबारा से वहां पे वो सर्वर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा से मेरा जो लोड बैलेंसर है वो मेरी रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा. गॉट इट द एवरीवन? व्हाई आई एम यूजिंग अ लोड बैलेंसर? Yes, sir. जी सर. तो लगता है कि काम की चीज है. Yes, sir. So now I'm just delete these all things. So Webserver 2 is running on. I'm just click on a load balancer and now refresh. The both services and now I'm refresh. तो आप देखिए कभी 1 2 कभी 1 2. तो आप देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार. तो आप देखिए मेरी रिक्वेस्ट चेंज हो रही है. मेरा यूआरएल सेम ही है बट यहाँ पे मैंने डिफरेंट सर्वर इसलिए बताया कि आपको पता लगे कि लोड बैलेंसर मेरी रिक्वेस्ट को दोनों सर्वर पे फॉरवर्ड कर रहा है. गॉट इट पॉइंट? Now I'm delete this load balancer and delete all instances. And now guys, next point is कि सपोज करो कि यहां पर आपकी जो रिक्वेस्ट है आपने यहां पर 5 सर्वर्स लगाए. दैट मींस एट दिस टाइम योर सर्वर इज लोड बैलेंसर कैपेसिटी कितनी है? 5 लाख है. यस और नो? Yes, sir. Yes, yes, अब yes. एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर कितने सर्वर की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है? 5 सर्वर की ना. पे एज यू गो है तो 5 सर्वर की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई यार. जी जी सर. नाउ गाइस, अगर आपका लोड आ रहा है लेस देन 1 लाख, तो लेस देन 1 लाख रिक्वेस्ट को तो एक ही सर्वर रिजॉल्व कर सकता है ना. यस सर. बट यहाँ कितने सर्वर ऑन हो रखे हैं? 5. तो ये लॉस है या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का? लॉस हो रहा है. लॉस है सर. चलिए. और अगर योर रिक्वेस्ट कमिंग मोर देन 5 लाख, अगर आपकी रिक्वेस्ट आ जाए मोर देन 7 लाख, तो क्या होगा? यहाँ पर कितने सर्वर हैं? 5 5 सर. सर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. जी सर. यस सर. प्रॉब्लम तो वही आ गई ना जो 1 लाख वाली है. यस सर. दैट मींस कि क्या कंपनी इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे यूज करेगी? इसमें कोई बेनिफिट लग रहा है आपको? नो सर. इसका सॉल्यूशन है. अगर आप इस क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक और सर्विस एड ऑन कर देते हो, दिस सर्विस कॉल्ड अ स्केलिंग, सर्विस कॉल्ड अ ऑटो स्केलिंग. गॉट इट माय पॉइंट? यस सर. So now explain me. I'm start scaling today and next class. सर नेक्स्ट क्लास. सर नेक्स्ट क्लास. Everyone.